अगर जो वोटर है उसे जाके लगता है भाई इस पार्टी ने मेरे कास्ट का कैंडिडेट खड़ा कर दिया इसलिए उसे वोट दूंगी, इस पार्टी ने मेरे धर्म का कैंडिडेट खड़ा कर दिया। मैं बहुत साल रूरल मध्य प्रदेश में रही थी। एक बार इलेक्शन के दौरान standing near where the voting was happening, some women were coming in. I asked one of them कि आप किसको वोट देने वाले हो? They named a party. I said भाई तुम्हें तो पता है वहीं का था हमारा representative, पहले भी क्यों दे रहे हो उसे वोट? She said नहीं दीदी वो लोग आए थे ना, वो साड़ी बांट के गए थे। नहीं वो साड़ी तो तुम्हारी हो गई, उन्हें क्या पता आप किसे वोट दोगे? दीदी पर ठीक नहीं लगता ना, उनकी साड़ी ले ली, अब तुम्हें वोट देना चाहिए। What is the primary motivator behind any politician? Their primary motivation is to ये election जीते, या election में जीतना है। So they spend 5 years spending their time doing whatever it takes to win the next election. Most of the time what it actually means is कि उनको लगता है election में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, तो इसलिए let us use this tenure to accumulate as much money as possible, which we can then invest in the next election. जो आपने मैडम बोला ये बड़ी गलत अवधारणा है, और ये अवधारणा ये है कि भाई वोटर सोच के वोट नहीं कर रहा, उसकी चॉइसेस में डिमांड सही नहीं है। देखिए अगर आप सच में, आपको मैं जमीनी बात करूं, अगर सिर्फ कास्ट के आधार पर ही वोटिंग होती तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप कास्ट वोट्स को ऐड कर देते समाजवादी पार्टी और बीएसपी की, और आप कह देते कि उनकी सब सीटें आ। उत्तर प्रदेश में नतीजा क्यों आया है? क्योंकि वोटर ने कास्ट से बाहर जाके वोट किया। अगर सिर्फ कास्ट और साड़ी के आधार पर ही वोट होता तो बागपत में जयंत चौधरी आराम से जीत जाते। भाई कास्ट कॉम्पोजिशन तो जाट की थी, मुसलमान की थी, पर इतनी लाखों मार्जिन से क्यों आ रहे? क्योंकि वोटर ने सिर्फ जाति नहीं सोचा, वोटर ने सोचा कि मैं कुछ और सोच रहा हूँ, कि भाई मान लो मैं प्रधानमंत्री इलेक्ट कर रहा हूँ। अगर सिर्फ धर्म के आधार पे वोटिंग होती तो किशनगंज बिहार के अंदर जहाँ पे 50% से ज्यादा मुसलमान है, वहां पे सिर्फ मुस्लिम के आधार पे वोटिंग होती, पर वहां पे ऐसा हुआ नहीं। तो ये आप लोग ये जो सोच रहे हैं कि भाई वोटर रैशनल नहीं है, वोटर की डिमांड से में चॉइस सही नहीं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मेरे हिसाब से आप सभी से ज्यादा अक्लमंद वो ग्रामीण वोटर है, क्योंकि उसको पता है कि भैया बायपोल के अंदर इसने मेरा नहीं बनाया सड़क तो मैं इसको हराऊंगा, पर अब इसने मेरी सड़क बना दी तो असेंबली में मैं इसको जिता दूंगा या लोकसभा में कर दूंगा। तो अगर आप में से कोई भी या कोई भी नेता ये सोचता है कि भाई वोटर सही नहीं सोच रहा, वोटर साड़ी के आधार पे वोटिंग कर रहा है, ये सबसे गलत चीज है। भाई मान लीजिए दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए, 2015 के अंदर जो आम आदमी पार्टी आई थी, क्यों आई थी? वो मुद्दों के आधार पे आई थी, क्योंकि करप्शन था, करप्शन के अगेंस्ट एक मुहिम चली थी जिसमें वोटर ने उनको सपोर्ट किया। तो अगर आपका एजेंडा और अगर आपका नैरेटिव वोटर पे सेल नहीं हो रहा है तो वोटर को बदनाम मत करिए। अगर वोटर जो है मेरे हिसाब से आज के युग में सबसे अक्लमंद वोटर है, अगर मेरे हिसाब से वोटर सबसे ज्यादा अक्लमंद से चॉइस रखता है, तभी एक पार्टी को असेंबली में हरा देगा, उसी पार्टी को असेंबली में। मध्य प्रदेश ले लीजिए आप, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शिवराज चौहान से नाराज थे क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया था, और कई जगह उन्होंने बड़े खराब कैंडिडेट किए थे। विदिशा में उन्होंने मुकेश टंडन को टिकट दिया जो इतना घटिया कैंडिडेट था। शिवराज चौहान की होम कॉन्स्टिट्यूएंसी होने के बावजूद शिवराज चौहान विदिशा से हार गए, और वही विदिशा लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब अगर आप कहें कि भी वोटर अक्लमंद नहीं है तो कैसे होता है ये चीज? राजस्थान ले लीजिए, वसुंधरा राजे ने कोई काम नहीं किया था तो भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के अंदर हरा दिया, पर वहीं जब लोकसभा की बात आई लोगों को लगा कि भाई हम प्रधानमंत्री को वोट कर रहे हैं तो जिता दिया। वहीं बायपोल गोरखपुर में ले लीजिए, कैंडिडेट ठीक नहीं था, भारतीय जनता पार्टी को हिस्टोरिक हरा दिया। वही गोरखपुर का बायपोल आप ले लीजिए, लोकसभा के अंदर उसको ऐतिहासिक मार्जिन से जिता दिया। तो ये आप अगर वोटर तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहे तो ये आपकी गलती है। आज वोटर के पास हर अपॉर्चुनिटी, और वोटर सबसे ज्यादा रैशनली सोचता है। और ये अगर नैरेटिव की भाई डेमोक्रेसी खतरे में है, इंस्टीट्यूशन खतरे में, भी वोटर सबसे ज्यादा अक्लमंद उस चीज पे रखता है। आपको लगता है कि डेमोक्रेसी खतरे में, तो उसको चुनाव का एजेंडा बनाइए। वोटर को लगेगा कि डेमोक्रेसी खतरे में है, अगर आप वोटर तक वो सेल कर पाए चीज को तो वोटर आपको उस आधार पे जिता देगा। जब इमरजेंसी के बाद में जेपी किस लिए जीते थे? इसी आधार पे तो जीते थे कि लोगों को लगा था ये खराब है देश के लिए, इसलिए जेपी को लेके आए। उसके बाद वो पार्टी ने काम नहीं किया तो दूसरी पार्टी को ले आए। तो प्लीज ये अवधारणा हटा दीजिए कि वोटर नहीं सही है, वोटर सबसे सही है। आपको जाके वोटर तक काम करना है, और मैं ये मानता हूं कि आज जो व्यक्ति काम करेगा उसको जरूर वोट मिलेगा। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा आवास के घर बने हैं, लोगों ने, दलितों ने जाके आधार उस पर वोट किया। मैं गाजीपुर में गया, मैं एक एससी महिला से मिला, उसके जब पति उसके साथ में था तो वो कहती कि भैया मैं मायावती के लिए वोट करूंगी, पर पति चला गया, बोला कि मुझे 10 साल से बिजली नहीं मिली, मुझे बिजली मिल गई, मैं क्यों नहीं वोट करूंगी मान लीजिए मोदी के लिए। वही आम आदमी पार्टी के लोगों ने क्यों वोट किया दिल्ली में? क्योंकि आम आदमी पार्टी एंटी करप्शन की मुहिम थी। अब स्कूल्स बने हैं, अगर स्कूल्स में अच्छा काम हुआ है, शिक्षा में अच्छा काम हुआ है, स्वास्थ्य में अच्छा काम हुआ है, तो एजेंडा वोटर तक जाएगा, वोटर को लगेगा तो फिर वोटर वोट करेगा। I don't glorify
criminals as Robin Hoods and pass them into a party and say the party is legitimized to use them, defend them at the national level, at the state level through the best institutions. The girl is fighting for her life, and did the state government even give her a rupee of anything 3 years? You don't want this girl or any girl in your family, in your neighborhood to live this life, this kind of life. And we are not even humanizing it. We are saying his wife has the right to be on that stage and his picture has to be there displayed because it's part of the political discourse and because this man is a robber. No, he's not. This is the nature of politics, and that is why we engage in a discussion that we want to change that, and that change is what we call as strengthening our democracy. See, first of all, understand that that guy has been sacked. You can comment on the delay of sacking. That I agree with Ghanshyamji here that he has that this person does not deserve to be there in the house, and he's been sacked. There is nothing like he's in the party, and it is much better than Ghanshyamji's own Samajwadi Party's Akhilesh Yadav going to Gayatri Prajapati's rally and glorifying a rapist. That is something which was absolutely wrong. So here an individual is sacked. You can question on the delay of sacking, and that is the beauty of democracy, that if one organ does not work properly, you have the other organ like the judiciary which is pitching in. In case of Nirbhaya, what happened in Delhi? The government was not acting, it was the Supreme Court which pitched into the picture, and that is what is called as checks and balances. Do you know about the girl who was raped in Rajasthan? How many of you know about it? Then I'm not doing any what about it. Not even a news. The problem with opposition or the problem with being an opponent, which I said in the idea, is that you are always selective. Now, Krishna ji spoke about the interview. I challenge you. You go ahead and see the number of interviews of the Prime Minister. From Rafale to every question is answered, and you go ahead and see Ravish Kumar's interview with Rahul Gandhi. And you see what did he ask? कि राहुल जी आप क्या पहन रहे हैं? और सोनिया गांधी आप क्या खा रहे हैं? So, see, the fact that you're losing an election does not mean that you question the ethics of media. What is wrong in media? You have a narrative, a media house believes that, okay, this is the way of looking at it. There's another media house which does another part of the story. You have digital where different parts of the story come out. You are not living in an emergency era where you control the media. Again, a false narrative that media is not correct, First, you have different ways. You will think in a different way. So, if you put a video, you will put a different point of view. She will put a different point of view. You are not biased. You are not fake. You are not fake. Let the viewer decide which is correct, which is not correct. And so this is absolutely wrong. Please, I think the best part will be that you go to the voter and put that as an agenda. And so I was talking about Crorepati. Why did Samajwadi Party not make that an election issue? I asked, right? So if being Crorepati or a lot of Crorepati in a poor country, first of all, we are less poor than what we were before. But in a poor country, imagine in a poor country that if a Crorepati is being contested, large Crorepatis are there. Let Samajwadi Party elect nobody to be a Crorepati. Well, Bharatiya Janata Party in Odisha had Akhilesh Yadav, Bharatiya Janata Party in Odisha had Pratap Sarangi, who is absolutely zero Crorepati. So people decide, right? AAP News, if Prasanji asks a few questions, he's kicked out of his channel. That is dilution of institutions. Thank you. You can't say that, and it was not a press conference. Rahul Gandhi goes there and says कि हम अपने journalist भेज देंगे उस press conference में. That is heights of it, sir. At least there is an interview which is given. Now, Krishna ji spoke about the interview. I challenge you. You go ahead and see the number of interviews of the Prime Minister. From Rafale to every question is answered, and you go ahead and see Ravish Kumar's interview with Rahul Gandhi. And you see what did he ask? कि राहुल जी आप क्या पहन रहे हैं? और सोनिया गांधी आप क्या खा रहे हैं? So, see, the fact that you're losing an election does not mean that you question the ethics of media. What is wrong in media? You have a narrative, a media house believes that, okay, this is the way of looking at it. There's another media house which does another part of the story. You have digital where different parts of the story come out. You are not living in an emergency era where you control the media. Again, a false narrative that media is not correct, First, you have different ways. You will think in a different way. So, if you put a video, you will put a different point of view. She will put a different point of view. You are not biased. You are not fake. Let the viewer decide which is correct, which is not correct.